thanks to everyone who listened to the song here and there in India as well. Viral हो गया था in the reels. कोई भी actor है, I think उसके लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती that he is getting to work with Kashif bhai because he is so phenomenal. He is brilliant in what he does. ना मैं सुनु चंदा वाली मैना हो सकती हूँ, ना मैं बारबीना हो सकती हूँ, ना मैं हया हो सकती हूँ. आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट. यहाँ हमारे मुल्क में तो ज्यादा फीमेल सेंट्रिक ड्रामास बनते हैं. रिसेंट मैंने बहुत कुछ देखा है, कला, पठान, एंड लास्ट मैंने क्या देखा होगा. सो अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स शोज फ्रॉम इंडिया. आई थिंक आई वाज वाचिंग 4 more shorts बिकॉज अब उसका वो नया भी वो आ रहा है. आई एम श्योर यू हैव वॉच्ड 4 more shorts. I think I didn't introduce myself. My name is Monica. I'm an assistant editor at Bollywood Hungama. Nice to meet you, Sabeena. Hey, good to see you. Good to see you, Monica. I do want to ask has it been a pretty roller coaster year for you? Yes. Yes, it's I it wouldn't be wrong if I say that it was definitely the most important year of my life. Right. और मुझे जानने की जरूरत है बिफोर वी स्टार्ट एवरीथिंग एल्स. आप काफी टाइम से काम कर रही हैं एंड इट्स नॉट बीन लाइक ये सडनली आपको एक व्हाट यू कॉल इट ब्रेक थ्रू मिला है. यू बीन जी. वर्किंग फॉर अ व्हाइल बट आई थिंक व्हाट चेंज्ड फॉर यू वाज तेरे बिन and something, but although Suno Chanda was something that people got to know you a little better, I feel, but Mm. something I think I've never seen the kind of popularity for a what do you call it, a villain or antagonist, this level where you were not just only popular in Pakistan, but there's a lot of fandom that was coming from India as well, and even South Asia from all corners. So I was there a point where you felt like thoda sa I should take a minute back and process all of this? Actually, yes, but then again, basically, वो time to sit back and think कि okay, I need to take a break. वो आया ही नहीं because I was too busy shooting for a lot of other things in the meanwhile. So I think I kept myself busy over there. तो मुझे ज़्यादा सोचने का time नहीं मिला, to be honest. Right. Let's start with Kabli Pulao. I think what a year for you. I feel like for someone who's been working for a while, but for someone to get a Kashif Nazar project, a lead role, and something that is so beautifully done, but also very relevant in current times. It must be so empowering as an actor to portray this, but also it must be a little bit pressure aa gaya tha ki this is a very heavy subject. Okay, yes. The pressure was there before I went on floor shoot के लिए. The pressure was definitely there because मुझे हमेशा से ये होता है, as much as I want to give my 100% किसी भी character को, but जैसे होता है ना एक टीचर को आपको खुश करके देना होता है, इसी तरह था. जब मुझे काशिफ भाई मिले as a director, so I wanted to make sure that I make him at least satisfied with my performance और कुछ कमी ना रह जाए, उनको ऐसा ना लगे that he made the wrong choice. तो मेरे लिए pressure बिल्कुल था, but I think I would like to thank all my co-actors. काशिफ भाई सबसे पहले कि उन्होंने मुझे इतना comfortable कर दिया था. I still remember on the first day as well कि वो pressure खत्म हो गया था. All I did later after my first day on shoot was just perform and just be there in the character and not think कि अच्छा ये क्या सोच रहे होंगे इनके लिए, if I'm I'm being enough for the character. मैंने ये नहीं सोचा. I think I was just performing after my first day at shoot. Right. मैंने ट्रेलर देखा and I think the day OST dropped, I've been listening to the song आंखें for very long time now. So I think मैंने इतने लोगों को सुना दिया कि अब सब लोग बोल रहे चुप कर जा. तो Yeah, it's written song, yeah. beautifully song, and thanks to everyone who listened to the song here and there in India as well. Viral हो गया था in the reels, and सब जगह मैं सुन रही होती थी कि बाहर जाती थी. So I would like to thank everyone, and it's a beautiful song, I Yeah, think. it is. It is. There is a particular stanza. I keep repeating it. But Stanza, और वो constantly सुनती रहती हूँ मैं. And then because it had been a while, एक OST had that kind of power on me. So it's so beautiful. What I do want to ask is, Barbina as a character is pretty challenging, and
इंडिया में तभी तक एयर भी नहीं हुआ था, बट आई वाज सीइंग क्लिप्स हियर एंड देयर ट्विटर में यू वर क्वाइट देयर वाज अ टॉक देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट द शो द कैरेक्टर एंड हाउ व्हाट डू यू कॉल इट progressive it is in terms of the storytelling. Hmm. Barbina as a character, how challenging was it for you? और डायलेक्ट पकड़ने में आसानी थी कि काफी डिफिकल्ट था? Okay, Monica, I've been very closely observing a lot of people around me जो कि refugees थे and you know my first hand experiences क्योंकि हम देखते हैं उनको हमारे मुल्क में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा तो मेरे लिए एक तो कैरेक्टर इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि मैंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ था सेकेंडली डायलेक्ट भी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था and also, I think most of the credit goes to the writer. It was such a beautifully written script कि आपको उसमें character में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा. The dialect, yes, I did adopt that. Character की कुछ छोटी-छोटी nuances, I did adopt that as well. वो भी मेरी अपनी observations है. Obviously, because आप actor ऐसे ही बनते हैं because you observe people very keenly. You observe different people when you go out. You observe the surroundings around you और आप आम लोगों से ज़्यादा observe कर रहे होते हैं तभी this is how you become an actor, right? So, but it was beautifully written character already. मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा. What is it like working with Kashif Nasser? I have seen so Oh many my projects, and he's one of the finest I have seen. The visuals that he creates, the beauty of the storytelling. तो मुझे तो बहुत पसंद हमेशा से रहे हैं. तो आप बताएं कैसी थी experience? फिनोमिनल आई थिंक कोई भी एक्टर है आई थिंक उसके लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती दैट ही इज गेटिंग टू वर्क विद काशिफ भाई बिकॉज ही इज सो फिनोमिनल ही इज ब्रिलियंट इन व्हाट ही डज एंड आई डोंट नो हाउ ही डज इट सो एफर्टलेसली मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने किस तरह से शूट किया इतना मुश्किल प्रोजेक्ट आई डोंट रिमेम्बर हिम गेटिंग एंग्री और हिम बीइंग वेरी you know finicky about one of his scenes or any one of his characters he was just going with the flow and it happened so I'm sure कि वो इसी तरह दूसरे सेट पे भी होते होंगे how does he do it so effortlessly is my question like you know it's like it just comes to him like that and he's an amazing human being like director तो वो बहुत अच्छे हैं ही हैं but he's an amazing human being. Right. For me, I feel like you are a young actress and someone as established as Mohammed Saab. He is someone who's been in the industry for so long. और वो simultaneously यूं ही भी direct कर रहे थे. जी तो जी. I was kind of surprised that he had enough time to act and direct at the same time. No, I don't think कि वो simultaneously कर रहे थे. Uni started off later, अच्छा but ये आपने पहले शूट कर लिया था. हमने काबली पहले शूट कर लिया था और उन्होंने यूं ही बाद में डायरेक्ट करना शुरू किया था एंड बाय दैट टाइम आई थिंक हम दोनों अपनी ना उम्मीद छोड़ चुके हुए थे बिकॉज ने शूट कर लिया था काफी टाइम से एंड इट वाजंट कमिंग आउट तो हम दोनों अपनी उम्मीद छोड़ चुके हुए थे कि अच्छा मैं अब जब बारबीना हो जाएगी ना हाजी मुश्ताक की उम्र की तब आएगा काफली पुलाव वी यूज्ड टू टॉक लाइक दिस सो आई थिंक हमें काफी टाइम हो गया था उसको शूट किए हुए. अच्छा आपने ये तेरे बिन से पहले शूट की थी. यस. Wow. Wow. Like it's amazing to see that. But how do you develop आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग्स होती थी मोहम्मद साहब के साथ और या फिर आप लोग ने डायरेक्टली ऑन ग्राउंड मिले और वहां पे डेवलप किया ये स्टोरी टेलिंग एंड केमिस्ट्री कंप्लीटली. That was the first time that I was meeting at the Sham sir when we met on set. That was the first time. मैं उनसे कभी क्योंकि मैं I wasn't a very established actor at that time और मैं ज़्यादा डायरेक्टर्स को नहीं जानती थी मिली भी नहीं थी लोग मुझे नहीं जानते थे तो मैं एहतशाम सर से मेरी कभी कहीं और भी मुलाकात नहीं हुई थी तो वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे और ये जो भी हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ऑन सेट ही हुई है आई थिंक एज मच एज आई वाज इन द कैरेक्टर ऑफ बारबीना I could see him in the character of Haji Mushtaq. So it wasn't the understanding between Sabeena and Ihtisham sir, although we're like, you know, we're very chill together. If you ever like talk with us, we're like literally chill buddies. But I think वो जो chemistry है वो बारबीना और हाजी मुश्ताक की ही है. Right. Or I because the story demanded age difference and everything, that was something that is such a big plot point of a storytelling apart from her being a refugee.
सो Hmm. वंस गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, अब मुझे किसी ने ट्विटर पे भी ये पूछने बोला था, तो what were some of the traits of Barbina that you were absolutely enamored by her, or something that you've taken away from her? Taken away from her. अच्छा तब तो आई थिंक आई कुड नॉट टेक अवे अ लॉट फ्रॉम हर बिकॉज हम बिट्स एंड बाइट्स में शूट कर रहे होते हैं, वो लीनियर इतना ज्यादा शूट नहीं हो रहा होता, तो पता नहीं होता कि कैरेक्टर जा किस तरफ रहा है। वो ग्राफ आपको एक दफा जब ऑन एयर एक चीज आती है तभी समझ में आता है। सो आई थिंक व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम बारबीना नाउ इज that you know Monica, this doesn't matter. आप जैसे भी दिख रहे हैं, आप जितने भी रॉ हैं, आपकी अगर अनटाइडी भी फेस है, ऑल्दो शी इज नॉट अनटाइडी बिकॉज बट शी इज नॉट वेरी टेप्ड एंड टेलर्ड, शी इज नॉट, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंसान अच्छे हैं, अगर आप दिल से अच्छे हैं, तो आपको फिर पूरी दुनिया पसंद करेगी। जैसे बारबीना को सब पसंद करें, यू विल सी दैट लेटर इंशाल्लाह इन द स्टोरी व्हेन इट अनफोल्ड्स, कि उसको सब पसंद करते हैं। तो वो आई थिंक आई हैव टेकन दिस फ्रॉम हर कि इट डजंट मैटर हाउ यू लुक फ्रॉम द आउटसाइड, व्हाट मैटर्स इज हम ये बात बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन हम शायद इतना उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। दिस इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम हर। दिस the other thing which is the big base of the drama कि वो एज डिफरेंस में भी प्यार हो सकता है, वो तो ऑलरेडी मुझे बारबीना से लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे खुद से एक एज डिफरेंस पसंद है। तो दैट आई कुड नॉट टेक फ्रॉम बारबीना, वो मेरे अंदर, वो बारबीना ने सबीना से लिया होगा probably. Same here. I think that's, I completely agree with that. What I do want to ask, and और मुझे ना ये last 1 year में किसी ने बहुत मैंने notice भी किया while I was watching Tere bin as well. I think sometimes people, and what do you call it, the audience, the viewers, sort of like don't understand the blur. They don't understand how to blur the lines between a character and an actor. And uh, while you were doing the show, while you were doing the show, and how Haya's graph completely was like, there was a lot of social media noise around that. So how do you take a step back कि वो negativity से हम हटे हैं और थोड़ा like, or do you like read everything? मोनिका, कभी कभी देखें ओवर द टॉप सीन्स आ भी जाते हैं, मतलब देयर वर मल्टीपल सीन्स इन द स्क्रिप्ट उसके अंदर जो कि मैं नहीं करना चाहती थी बिकॉज दे वर actually things that no one would do, मतलब let alone हया, वो कोई भी हया से ज्यादा प्यार करने वाला इंसान भी, but then obviously if it's a requirement of the script we have to do it. तो I cannot blame people. All I can blame them for is कि हाँ उनको पता होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट में और एक आर्ट में क्या डिफरेंस है. There is a difference between art and artist. This is what I shot before Tere, and this is what I could pull off, and this is what I could pull off as well, and probably and then you were talking about Sunachanda, I pulled off a comic role. तो अगर आपको लगेगा कि हाँ सबीना कॉमेडी है, तो सबीना कॉमेडी नहीं है. सबीना इज अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन एट द सेम टाइम बिकॉज शी डिड बारबीना. एंड अगर आप ये समझें कि वो सिर्फ इमोशनल और अच्छी है, नो, आई हैव डार्क साइड टू मी एज वेल, एवरी ह्यूमन डज, राइट? तो वो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो इंसान जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो नहीं हो सकता कभी भी. ना मैं सुनु चंदा वाली मैना हो सकती हूँ, ना मैं बारबीना हो सकती हूँ, ना मैं हया हो सकती हूँ. आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट. बट लोग ये भूल जाते हैं, दे डोंट नो वे टू ड्रॉ द लाइन अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो इतना अटैच भी हो जाते हैं कभी कभी. एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज आई थिंक मोनिका, उनकी अटैचमेंट मेरे से ज्यादा, बिकॉज जो लीड पेयर के लिए बहुत ज्यादा थी, वो बहुत उनके लिए वो चीज ज्यादा अटैचमेंट उनकी जो थी, वो चीज मेरे लिए थोड़ी वो हो रही थी. इट वाज़न्ट मी ऑल अलोंग, उनके लिए वो दैट वाज इम्पोर्टेंट. Right. No, no. From what I have seen, you were in conversations always. So I think there was someone who's had a great year. I think it should be applauded as well. Like, because it's not easy to do that after. It's not like it's overnight. You worked hard to reach there as well. So there has been that. Has Kabli Pulao changed the way now? Maybe if producers or directors see you as an ओ artist. यस, ओ यस, ओ यस. मैं अभी 2 दिन पहले, बिकॉज आई वाज इन अनदर सिटी, जैसे आप लोगों का बॉम्बे है तो हमारे यहाँ पे कराची हब, एंड आई लिव इन हाँ. इस्लामाबाद. So I was there and I met some producers and I came back and I was telling everyone, I was like, these people, I can clearly remember the last time that I met them. And this time around, they were completely different people. And that makes me sad, Monica. That makes me sad because um, I'm the same human being.
मतलब हम अब आई डोंट नो, हम पता नहीं कब बदलेंगे, शायद मैं भी खुद ऐसी इंसान होंगी, मुझे नहीं पता, मे बी आई एम स्टिल टू डिस्कवर। बट आप किसी की सक्सेस और फेलियर से उससे अच्छे या बुरे तरीके से नहीं मिल सकते। आपको काम आप उसको उसके फेम पे दें, सक्सेस पे दें, लेकिन आप मिले तो एटलीस्ट वैसी, अगर वो नहीं भी है इतना पॉपुलर, मिलने मिलने में डिफरेंस अच्छा नहीं लगा मुझे। आई वाज लाइक आई नो दीस पीपल, आई हैव मेट देम बिफोर, दे weren't like this. So yeah, that makes me sad थोड़ा सा। That's an industry that's everywhere, I guess. I have listened to this a lot here हाँ, as काम काम मोनिका, काम आप देना किसी की सक्सेस और फेलियर पे, आप उससे मिलने को मिलना क्यों डिपेंड कर रहा है सक्सेस और फेलियर पे? काम डिपेंड करना चाहिए। आपने काम नहीं अच्छा देना, दैट्स ओके, बिकॉज एक बंदा ही इज नॉट पॉपुलर, बट आप मिले भी अच्छे से नहीं। no, that's very sad, and that also upsets you, and morale भी down हो जाता है उसके बाद. You sort of question yourself as well कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? I can completely understand what you're saying. I may not be in your footsteps definitely, but I can understand what you're saying. But do you think that the way now the scripts might be coming, or जो भी आपको भी pitch किया जा रहा है, is something that is meaty, that is good, and that is something that you've always wanted to have? No, I think I'm in a very fragile position at the moment because I think मोनिका, लोगों ने इतनी ज्यादा मुझसे अपनी हाई होप्स कर ली हैं अब, फॉर विच अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। पर एट द सेम टाइम मुझे एक बड़ी ट्रिकी पोजीशन में भी ले आए हैं वो सब, क्योंकि अब द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट यू टॉकिंग अबाउट, दोस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स आर नॉट मेड एवरी डे और नॉट रिटन एवरी डे। क्योंकि दिस वाज एक्चुअली काबली वाज जस्ट एक वो ऑड वन था बीच में से। अदरवाइज स्क्रिप्ट्स लाइक दीज, मेरे हाई होप्स नहीं थे काबली को लेके, आई जस्ट did it with my whole heart, but I wasn't expecting a lot from the audience. It just worked out, and fortunately for us. But इस तरह की scripts नहीं, chances नहीं लेते producers, so I'm not getting although I'm getting like a lot of scripts now, but not with a lot of content, a lot of meat जैसे आप कह रहे हो, not that. वो तो अभी पता नहीं कब ही होगा, अभी तो नहीं पता। Is it because like the PTV demand is more soapy kind of a story like जो prime time पे दिखाते हैं, that is what is more in demand. But I feel Yeah. like this 1 year I have seen a lot of change. Let's just say for a youth drama like Fairy Tale that has been doing well. For that matter, even a show like Jeevan Nagar came out, जो भी काशिफ सर का ही है. आपका शो आया कबली पुलाव, तो मैं आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ स्कोप टू फॉर सच शो टू डू वेल एज वेल, राइट? बट मोनिका, उस पे प्रोड्यूसर्स के स्टेक्स बहुत वो होते हैं कि दे डोंट नो इफ दैट्स गोइंग टू वर्क फॉर देम, दैट दे डोंट नो। एक फॉर्मूला है, उनको पता है ये शोर शॉट चलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं तो बिरयानी बनाएंगे तो डेफिनेटली सबको बिरयानी पसंद होगी, अगर कुछ पुलाव बना लिया तो प्रोबेबली पुलाव एक को पसंद हो, दूसरे को ना हो। इट्स जस्ट लाइक दैट, वो एक फॉर्मूला है, वो काम कर रहा है। इस फॉर्मूला पे वो कभी काम कर जाएगा काबली की तरह और कभी नहीं करेगा, तो फिर क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम है। I have watched everything from what people would suggest is cringe to everything that's good as well. What I do want to ask is how has things changed? Because there was a point where this angry young man was like taking over stories, and it had become so weird to watch that. But these good stories came about. So I think social media also has a lot of power. कि Twitter पे ये सब discussions होते हैं कि oh, this show is doing well, you should watch it, you should watch it. एक्चुअली मोनिका, ये सारा पावर है आप लोगों के पास, ये सब पावर है ही आप लोगों के पास। अगर आप किसी चीज को ट्रेंड पे लेके आते हैं, दैट्स यू। इफ यू टॉकिंग, इफ यू मेकिंग समथिंग द टॉक ऑफ द टाउन, दैट्स यू, दैट्स द ऑडियंस, दैट्स नॉट अस। हम तो हर ड्रामे में ही अपना 100% देते हैं ना। हम ये नहीं, हमें तो पता नहीं है उसको शूट करते हुए कि ये ड्रामा हिट जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें तो 100% देना है अपना हर दफा। हमें तो नहीं पता होता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। आप इसका एंड रिजल्ट डिसाइड करते हैं, जितने भी लोग हैं। इफ दे टॉकिंग अबाउट समथिंग, अ सर्टेन प्रोजेक्ट ऑन ट्विटर, they are making it a trend. If they're giving it a lot of importance on the social media, like on other platforms, they are making sure that that project is a hit. For example, like this one, I am so happy about my country and about other, otherwise all around the world as well, कि उनको एक अच्छे project के बारे में वो बात करें, because to be honest, that has opened a little but a door for projects like these.
Fair enough. I completely understand because I have been watching Jeevan Nagar as well. And it's like the same director, but what different perspectives to showcase stories. I'm Yes. absolutely like, मैं तो एकदम से, what do you call it? Like, I'm stunned by the kind of vision that he has to tell stories. And अभी उनकी pink shirt भी आने वाली है. So there is going to be something different as well. I don't know. मतलब he has no limits. I'm sure Kashif भाई has no limits. वो कुछ भी कर सकते हैं. मतलब he can do everything and anything. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये तो उनका कमाल है. But thanks to him as well. आप देखें काशिफ भाई हैं जो कि for the I don't know how many years, since how many years he has been directing such scripts, and he has been going, you know, the other way. वो वाले स्क्रिप्ट्स नहीं लेते जो कि एक फॉर्मूला स्क्रिप्ट्स होते हैं. सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू डायरेक्टर्स लाइक हिम एज वेल कि वो उनको अच्छा काम करना है. उनको नहीं पता कि कल को ये हिट है फ्लॉप है, उनको बस अच्छा काम करना है. तो बट वो ट्रिकी भी होता है ना. वो ट्रिकी इसलिए होता है, हमारे हमारे लिए बहुत ट्रिकी होता है मोनिका, क्योंकि डायरेक्टर तो अगला प्रोजेक्ट फॉरन कर लेता है. हमारे लिए ट्रिकी इसलिए होता है बिकॉज़ अगर हम वेट करते रहेंगे फॉर अ स्क्रिप्ट, अ गुड स्क्रिप्ट, अ सोलफुल स्क्रिप्ट, तो प्रोबब्ली इट वोंट कम फॉर 2-3 इयर्स. तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हम बैठे ही रहते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं, इट डज़न्ट कम, तो हमें कहीं न कहीं बीच में ट्रैशी काम करना पड़ता है. As a lead actor now, do you think that now that so much of international audience is also watching Pakistani drama, that may change the perspective of who the producers and directors are now casting more? Yes, I think it does matter yeah, to a little extent, but then at the end of the day, I think वो फिर भी यही देखते हैं what is popular in their masses, like in their country, obviously, because जो भी आप जितना भी deny करें, maximum reach तो आपको अपने ही मुल्क से मिलती है. And I will not deny getting a lot of scripts now, but वो गुड स्क्रिप्ट्स भी हैं, वो प्रोड्यूसर्स की नज़र में गुड हैं. वो अदर एक्टर्स जो कि ऑलरेडी उनको साइन कर चुके हुए हैं, जो कि मेरे वो मुझे बताते हैं कि आपके साथ पेयर में ये हैं, उनके लिए वो अच्छी हैं. आई थिंक वो दे नॉट जस्ट गुड इनफ फॉर मी एट द मोमेंट. Acha. Monica, I think now Allah ka shukr hai, all thanks to each and every one of you who has loved Kabli Pulao. I have seen my potential as well. ऐसा ऐसा पहले नहीं हुआ था. ये मैंने खुद भी जब देखा है तो I could see the potential. वो होता है ना, आपको खुद भी तो देखना होता है, कभी-कभी खुद भी आपको पहचानना होता है. So when I see that, लोग तो obviously कहते हैं, अब मतलब मैं उठती हूँ सुबह तो मैं सोते तक यही सुनती रहती हूँ. बट कभी-कभी आपको खुद भी देखना होता है. तो आई थिंक व्हेन आई सी इट, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, ये लोगों के साथ तो ज्यादती होगी कोई बुरा काम करना, या आपके अपने साथ भी ज्यादती होगी, बिकॉज आप टाइम उतना ही दे रहे होगे एक प्रोजेक्ट को, एंड इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी तो इट्स जस्ट लाइक दैट. Sabina, from the time that you started working till now, like what do you think has changed over the years as someone who's been working for so long, and as someone who's been viewing industry from afar as well? अच्छा, आई थिंक मेरे लिए, फॉर समबडी लाइक मी, बिकॉज आई वाज ऑल ओवर द प्लेस लाइक एज अ पर्सन, बट मेरे लिए आई थिंक दिस काम वाज इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट. आई थिंक गॉड वाज जस्ट वो एक होता नहीं है, आपको एक तैयार कर रहा होता है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, बिकॉज दिस इज व्हाट आई बिलीव कि वो ही वाज जस्ट प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस टाइम. आई वाज बिकमिंग दिस पेशेंट, बिकॉज एक पेशेंस आपको बहुत चाहिए होता है इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली. एंड व्हाट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स? नथिंग मच. बिकॉज मोनिका, एक मैं बहुत बात का जो है रिगार्ड देती हूँ पूरी इंडस्ट्री को, especially the actors, if not the producers, not the producers वैसे honestly, but actors को मैं इस चीज़ का दूंगी क्रेडिट. उन सब ने मुझे पहले भी बहुत इज्जत दी थी और वो आज भी मुझे इज्जत देते हैं. सो नथिंग रियली चेंज्ड इन दैट पार्ट. शूट के टाइम पे ऑन सेट सब इज्जत देते थे, सब प्यार देते थे. प्रोड्यूसर्स थोड़े से मीन है उनका कुछ नहीं कर सकते. अब नहीं है, लेकिन पहले थे. इधर इतना पीटीवी कंटेंट देखते हैं, तो आप कुछ देखती हैं यहाँ से जो आपको बहुत पसंद है, या आपने कुछ Uh, रीजन मूवीज या टेलीविजन में कुछ देखा है? not the dramas, no, but yes, a, That's a okay. lot of movies, a lot of movies, a lot of them. अच्छा, रीसेंट में कुछ देखा आपने जो आपको कोई पसंद आया? मैंने वो बिकॉज ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स ही है कि हमारे पास यहाँ पे
रिलीज नहीं होती. सो आई थिंक अब रिसेंट मैंने बहुत कुछ देखा है, कला, पठान, एंड लास्ट मैंने क्या देखा होगा. सो अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स शोज फ्रॉम इंडिया. आई थिंक आई वाज वाचिंग 4 more शॉर्ट्स बिकॉज अब उसका वो नया भी वो आ रहा है. आई एम श्योर यू हैव वॉच्ड 4 more शॉर्ट्स. So I think I was following that very religiously. Now another season is coming. So I think a lot of Bollywood stuff, movies and shows. माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. मतलब अच्छा काम आप दूसरों से देख के ही सीखते हो. तो वो अब डिपेंड ये नहीं करता कि आई एम नॉट ओनली वाचिंग माय ड्रामास, ऑल्दो आई डू लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ ओल्ड ड्रामास हमारे यहाँ पे पीटीवी के या प्राइवेट चैनल्स के. मैं पुराने यूट्यूब से आर्काइव निकाल के देखती हूँ. But also your movies, your actors, Hollywood के actors, we get to learn from everyone. Because आपने भी notice किया होगा मोनिका, your A-list actors, they have improved within the years. You see them 10 साल पहले की movie में and you see them now, there is a drastic change. There is a big change. So I think वो जो change है, वो जो maturity है, we're always looking for that and we always learn from that. आप ऐसे कोई growing up was acting something that you always wanted? Because I had seen your interview and you said that college was something you were pretty much intrigued by certain things. But was there an actor or actress that you looked up to and you felt like I could do something like this? Never? No, I never had that actress वाली, I never had that. बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब मुझे ऐसे या मतलब वो साड़ी लहराने वाला वो आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू दैट. मतलब आई वुड लव टू बिकॉज इट लुक्स वेरी अपीलिंग व्हेन यू सी इट. बट मेरे अंदर वो कभी था भी नहीं. I didn't have that proper अदा to be an actor, या वो patience भी नहीं था, या वो एक personality होती है proper to be a not an actor but a star. तो मुझे नहीं लगता कि I was that. I never wanted to, and I never thought that I would. It just happened. It just happened. Like all along, it was just happening. मैंने जब अपना पहला project किया था मोनिका, and that happened by a very big coincidence. And when I did it, I think that was when I thought that okay, I can do it, and this is what I want to do. Right. But आप जब अदा वगैरह बोल रही है, I've seen your campaign shoots and all. What are you talking about? You're good at it. These things. एक तो पहली बात तो ये we get paid for that. तो पैसे के लिए तो ना क्या कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. I love that you're so realistic about this. Get your bag. या बिकॉज अब एक तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग पेड फॉर इट, और थोड़ा बहुत अब कर आ भी गया है. थोड़ा बहुत तो आ गया. नाउ आई कैन No, no, दैट I've been दिस. watching your reels and all, so it's very nice to see that. And I love the fact that you, the only person I feel like who's able to like utilize whatever she got in the last 1 year in a very, really, really good way. And it's really nice. Touch wood, touch wood. It's really nice. आज मेरी सुबह अपनी मामा से बात हुई थी. ऐसे मामा मुझे शी इज लाइक कि तुम बिल्कुल लाइक यू वर ऑलवेज दैट किड हु डिड नॉट यूज टू गिव टाइम टू हर पेरेंट्स एंड हर फैमिली. अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता क्यों, बट नाउ शी वाज मोर कंप्लेनिंग अबाउट इट. एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा मामा आपको क्या बुरा लग रहा है, मेरे पास अपने लिए वक्त नहीं है. आई हैव नो क्लू ऑफ रात एंड दिन के दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है. बट आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस टाइम एज मच एज आई कैन, because my next step would be to be the voice, for a good change. So for that I have to work दिन रात जितना मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकती हूँ इस वक्त में. आई हैव टू बी, because if I have to be a voice for a good change, of a voice for a good thing, उसके लिए I have to work hard, and इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता to work hard. That's right. I will have to wrap up now. I've been given a heads up. Thank you so much. It was lovely talking to you, Monica. Thank you so much for your time. No, no, thank you so much for your time, Sabeena. मैं तो आपसे बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी. Luckily जिंदगी वालों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी. No, thank you so much. And I'm really keeping my hopes high. I hope कि मुझे जल्दी response मिले, because tomorrow is the day. It's the Yeah. big day. मुझे आज किसी ने शेयर किया हुआ था. I don't know if that was a fake AI generated or what. किसी ने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था. There was a big billboard in some city, and I was like, no, मेरे अपने मुल्क में थे billboards. I saw them, but I'm not sure if Yeah, that's maybe AI I'll have generated. to go around looking in Mumbai as well to know that. Thank you Lovely so talking to you. Lovely talking to you, Sabeena. All the very best, and I just hope that from here on you rise further.
बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह Bye हाफिज। bye. Thank you.